Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Ambuj-Raj. Today we are going to start one of the most important topics for class 10th mathematics students, which is linear equations in two variables. Actually this is part 1. We will discuss here some more concepts regarding to those linear equations that we had studied in class 9. Actually this chapter we already had studied in class 9. So apart from that only we will continue. So let's start this chapter. First we are going to see what do mean by linear equation in two variables. Means that there must be two variables in a equation. Suppose that I'm going to give you actually how whenever someone will ask from you what is linear equation in two variables, then we have to reply an equation having two variables is known as linear equation in two variables, and even that equation need to be in a linear form. Means that the maximum power of that equation need to be 1, then only it will be a linear equation. So let's see the basic concept or the basic form of linear equation. Means that what is the basic form of linear equation? This is what the linear equation basic form: ax plus by plus c, and there are certain characteristics or there certain things that we have to mention in our mind when we have to write this basic form. Means that a can't be 0. This is very important and very informative information for us, that a can't be 0. Always this thing will happen, or we have to remember that. Since a can't be 0 and b can't be 0, and a, b, c all three are real numbers over here. So let me ask one major thing from you all, that what will happen suppose a is 0 over there, then what we will get? Whenever a is 0, then the coefficient of the variable will get over here 0, and whenever 0 is multiplied by another term, then also we get 0. Hence the next equation which we will get, suppose here we are putting a is equal to 0, then we will get this one, and here only we can see that one variable is only present over there. Hence we can say that it is the linear equation in one variable. So where we have to mention one thing, that both a and b can't be 0. Now we are going to see about simultaneous. Let me write it first because most of these students are getting confusion in that. Let me write first what is that. Let's start. Dekho. Now we are going to see solution of linear equation. Then only you will understand that thing very easily. Now we are going to see solution of linear equation. Let's see here. Actually, in case of linear equations and two in two variables, we get alpha and beta as a solution. Means that there will be only two value of the variable, or there will be only two values. Yani suppose we are taking here x is as alpha and y is as beta. So what we will get, the alpha and beta are the two values of the variable. So let's see how we can solve. Actually, first suppose I'm going to give you one equation. Suppose x plus y is equal to 7 or 5. This is our equation. X plus y is equal to 5. So let me ask you first whether this is a linear equation in two variable or not. Here we have to see the basic form that I told you, x plus by plus c. Now look here, whenever we will make it in that form, what we will get? X plus y minus 5 is equal to 0. Is it clear? And now look here actually a is multiplied by means x is multiplied by 1 and y is multiplied by 1. So we can't say that this equation is not a linear equation in two variables, because both the variables are having 1 as their coefficient. Now we are going to solve it. There are many values of or solutions of a linear equation in two variables. Means that we can't say here that only one or two value is fixed that of a linear equation. But in certain cases, exceptional cases, that we are going to see here in this video later. Now we are going to see what are the values. Suppose here example we took here x and y. So let's see which are the possible values of this particular linear equation. So let's see here. Suppose we are taking 1, then what we will get? 6. Suppose we are taking here 0, then what we will get? 7. So there are so many possible values of a linear equation. So we can say here 1 plus 6 is equal to, sorry, here 5 no. Suppose I'm taking here 7. 5 also that only,
we have to do that process only. So 7, 1 plus 6 is equal to 7. Then again another value might be 0 plus 7 is equal to 7. Means that we are confirmed and clear that there are so many infinity values of solutions of a linear equation in two variables. Now we are going to see actually look here, in class 9 we have seen so many linear equations, but there you will see only one linear equation comparing with itself only. There you will not see so many equations of linear equations. But here in class 10, the most important thing that we are going to see is that we are seeing over here at least two linear equations or two equations in two variables. Means that, let me tell you, suppose one example. By one example only, you will understand everything nice. Before that, if you are new to our channel, please subscribe our channel. Once again, I am telling you all, and join the Telegram channel too. Now we are going to see about the simultaneous linear equations in two variables. What do you mean by simultaneous linear equation in two variables? Now let's see one example. Simultaneous linear equation in two variables. Now we are going to see what do we mean by simultaneous. Actually, in case of simultaneous linear equations, there you will see that in every cases the values of the variables is actually having the same relativity, or we can say that the same relation is being followed by the variables in every cases. Now let me give you one example. What do you mean by simultaneous linear equation in two variables? By example only you will start, you will get it very easily. X plus y is equal to 5, or we can say here, and xy is equal to 6. Suppose this is what our given equation. Now look here. Here in both cases you can see here, or let me change it, that 2x plus 2y is equal to 10. Then only you will get, suppose there are two equations, first equation and second equations we are given. Now we are going to see what do you mean by simultaneous linear equation. Actually, I told you that simultaneous linear equations always behave or always show the relations of that particular variable in every cases. Means that from here we can take x plus y. Suppose we are taking here x as equal to 2 and y is equal to 3. Then we got here 2 plus 3 equal to 5. Now look here. Here we are taking here common 2, x plus y, and what we got here x plus y equal to 5. Then 2 into 5 equal to 10. Means that we are clear and confirm that कि यहाँ पे y लोग हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं ना, बस उसका जो रिलेशनशिप है, चलो यहाँ पे अगर मैं 3x प्लस 3y कर देता तो वहाँ पे क्या होता 15 हो जाता। यार एवरी एस्पेक्ट में अगर वहाँ पे हम लोग इंक्रीज भी करते हैं या डिक्रीज भी करते हैं, लेकिन जो उसका रिलेशनशिप रहेगा यानी आंसर जो हमारा आएगा वह हमेशा फॉलो होगा ही होगा। नहीं तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि हियर देयर माइट बी सर्टेन चेंजेस। चलो ये हमारा इक्वेशन सेकंड ना लेके आप थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करता हूँ कि हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सपोज दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन इज। सो व्हाट वी विल गेट हियर, यहाँ पे चलो थ्रू हमारा इसे हम 3 ले लेते हैं तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो वी आर क्लियर एंड कंफर्म दैट इन एवरी रिलेशन, इन एवरी इक्वेशन, द रिलेशनशिप ऑफ a linear equation in two variables of simultaneous makes it 100% or performs it 100%. Now we are going to see another term regarding to linear equations in two variables. Actually, in case when we go to study about the solutions of linear equation in two variables, I told you alpha and beta are the variables value that we get. Now let me ask you one major question is that there are two major method of solving a linear equation. Either we can represent or show or find by equationally, or we can say that algebraically by, or either we can use the graphical method to find it out. Now let me tell you first about the graphical method that we are going to see in this video, and what about the algebraically method of solving a linear equation into variable that we will see later in the next video. So here we are going to start another thing, that is a system of simultaneous linear equation, because this simultaneous linear equation two variable is very essential for us. Then only you will understand better about the inconsistent and consistent variables or system of equations.
So is it clear to you all? Now we are going to see about the inconsistent and consistent system of linear equations. So let's start and see about the inconsistent and consistent linear equations. Consistent and inconsistent. Let's begin. Actually, here we are already confirmed that the properties which we will get in case of consistent will just be opposite of the properties of inconsistent linear equations or in two variables. Now we are going to solve it. Here we will take by one example only I will show you. Actually, in case of consistent variables or consistent equations, the values which we get in two simultaneous equations are not equal. Means that we can say that there we don't there we get a lot of many values, but only, or we can say that at least we will get one solution of the linear equation in two variables. Now let me tell you by an example, then only यहाँ पे आपको समझ में आएगा. देखो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दोनों क्या होता है, सिमल्टेनियस होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट में क्या होता है कि वहां पे एटलीस्ट आपको वन वैल्यू बोथ वेरिएबल का मिलेगा ही मिलेगा, और वन से ज्यादा भी मिलता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की, तो वहां पे क्या होता है कि आपको वैल्यू मिलते ही नहीं है, यानी नो वैल्यूज एट ऑल दैट वी गेट फ्रॉम द इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. नाउ वी आर गोइंग टू सी एन एग्जांपल. लेट मी टेल यू. देखो भाई, ये तो कंसिस्टेंट का मैंने पहले ही दिया, जो हमारा वो था वो एक कंसिस्टेंट ही था, तो एटलीस्ट हमें वन वैल्यू मिल रहा था, जो पहले वाला एग्जांपल मैंने दिया जहां पे आपको सिमल्टेनियस होता है. लेकिन चलो देखते हैं इनकंसिस्टेंट क्या हो सकता है. देखो अब इनकंसिस्टेंट जो है वह कंसिस्टेंट की प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट रहेगा, यानी वहां पे हमें कोई ही वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा. लेट्स सी. सपोज टू इक्वेशंस वी आर गिवन, x plus y is equal to 3 and 2x plus what we can take here, 2x plus, here now look here on the basis of first equation only we take the second equation. So let me write it about that only. Yes, 2x plus 2y equal to 7. Suppose two equations we are given. ये कोई बुक का मैटर नहीं है, अपने मन से भी आप एग्जांपल ले सकते हो, इक्वेशन ले सकते हो, बस वहां पे क्या देखना, हमें देखना क्या है मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूं. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सॉल्यूशंस. इन केस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सपोज वी आर टेकन हियर 2 plus 1 is equal to 3. The values are 2 and 1. What about this one? By taking here 2 as a common, we will get here x plus y is equal to 7. Now when we will put here the value 2 into 3 is equal to 6, which is not equal to 7. So are you all clear about this fact that ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है कि नहीं? देखिए अब यहाँ पे क्या है कि x plus y is equal to 3 है, तो ये y हमारा 2 plus 1 मैंने लिया और ये हमारा ये रिलेशनशिप को फॉलो कर गया. ठीक है, अब जब हमारा अगला रिलेशनशिप है तो यहाँ पे ये फॉलो ही नहीं हो रहा, यानी ये जो इक्वेशन होता है ये कहलाता है हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. एंड इफ यू वांट so many examples you will see in this video only that we are going to see. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल होता है भाई लोग, कोई इसका फिक्स नहीं है कि आप यही एग्जांपल क्यों ले वो लो, अरे सब में यही होता है कि अगला वो चैन ही नहीं फॉलो करेगा, रिलेशनशिप में फॉलो नहीं करेगा. अब देखो मैंने यहाँ पे 2x plus 2 का लिया, अब अगर रह जाता कि x minus y, ये वाला रह जाता, देखो कि सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड है, ये x minus y equal to 4, और जो कि इसमें पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 2 minus 1 is equal to 1, तो यहाँ पे 4 कैसे आएगा, यानी ये जो इक्वेशन कहलाते हैं वे होते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. सो आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? इज दिस क्लियर टू योर? ये कमेंट कर दिया भाई लोग. देखो अब इसके बाद नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और वी कैन से दैट द बेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए वैल्यू और वेरिएबल्स वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ इज इट क्लियर टू ऑल अबाउट इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट? एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द केसेस व्हिच वी गेट टू सी इन केस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली इट. Now I am going to tell a very secret information, very important information regarding to linear equation in two variable, यानी this chapter. भाई लोग चलो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है या क्या हम लोग जाने वाले हैं. Now we are going to see solution of linear equation by graphically. यहाँ पे डैश 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 यानी हमारा ये ग्राफिकली. ठीक है भाई लोग, इतना क्लियर है, ये कंफर्म है आप लोग. अब देखो मैं जब ये क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं, यानी ये टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर बस 3 चीजें आप ध्यान रखना कि ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल इन एनी लीनियर इक्वेशन. भाई लोग बस इतना याद रखो, मीन्स दैट वी हैव टू रिमेंबर ओनली 3 थिंग्स रिगार्डिंग टू देयर सॉल्यूशंस.
look here, I'm going to tell that one. Actually there are only 3 cases that we have to see or we get to see when we solve any linear equation. Suppose that what are that cases? In first case we will get at least one and unique solution of a linear equation. In case second, we will get no any solution at all. And what about the third case? And third case we will get many or we consider infinite value of that linear equation. Means क्या तीनों क्लियर है? मैं आपको क्लियर करता हूँ one by one. So for in first case we are going to see where we will get at least one and unique solution. Now let me tell you by that only. Before that, here we are going to use two equations, so we have to write this form, which is very essential for one. Ax plus by plus c. Here a1 b1. This suppose this is what our first equation, and we are going to take here second equation also. So a2x plus b2y plus c is equal to in second equation. ठीक है, ये हमारा दो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिया है. 0 0 दोनों साइड आ रहे हैं, इसमें रहेगा, इसमें कोई डॉट नहीं है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द, यानी तीनों केसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट केस. व्हाट विल हैपन, एज आई टोल्ड यू, there one and unique solution that we will get at least one solution in case first. देखो अब case first का क्या होता है? We are already known from the informations regarding to coordinates, so there should not be any confusion to you all. Now this is what our order. I'm not going to write too much. Now this simple graph only we will understand very nicely. Is it clear to you? Now look here. In case first, what we have to see. Now look here. Whenever there is one and only one unique solution of two equations, then the line representing their coordinates of both equations always cut each other at one and only one point. Means that they will not cut each other more than 1 point. At 1 point only they will meet each other, or we can say that at 1 point only they will cross each other. Now let me tell you by an example. Wait guys. By example we are going to see it later, but let me first tell you about the basic things that we have to see. Actually here what we get, suppose I'm going to represent, this is what the first line. Here we have to draw a straight line representing the equations or the coordinates of first equation of two variables. Suppose this is what the straight line or the linear line that we get while representing the all the variables value or coordinates we can say. And whenever we will draw the another straight line or the another values of the second equation, they will only meet each other, or they will only cross each other at a single point. Then we have to remember always one thing, is that they are having only one solution. This is what the case one. I will give you example of every 3 cases. First case clear है कि नहीं मुझे कमेंट कर दिया. And now we are going to see about the second case, what we have to see in case number 2 regarding to linear equation in two variables. I already told you guys, because here in this video we will only see about the graphically representation, and in case of solving linear equation by we consider algebraically, we will see in part 2. So here we are going to see about the case 2. What happens in case 2? Case 1 clear है? Now we are going to deal with case 2. Here in case of case 2, there we get that there is no any, wait guys, yes, it is clear, video quality, alright. Now we are going to see in case 2 that there is very, we can say that there are infinite values or infinite solutions of linear equation in two variables. Now let me draw it first. Suppose this is what the line representing all the values, or we can say that the coordinates of the variables here we are getting over in this straight line, and even the values will get 100% matched by both the equations. Suppose that y हमारा क्या, x plus y equal to 10 हमारा एक वैल्यू, और दूसरा क्या है x minus y equal to 5. अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ये दोनों का मैच हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू, सपोज वी आर टेकिंग हियर, चलो भाई ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसे हम लोग 2 कर लेते हैं. तो देखो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 3 plus 2, ये हमारा हो गया 3 plus 2 equal to 5. In case of 2,
तो ये हमारा 2 + 5 = 10, यानी जो भी हम लोग वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं ये एक दूसरे के डबल हो जा रहा है यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर दूं तो वहां पे क्या होगा कि ये दोनों का सॉल्यूशन या ये दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा दोनों ही वेरिएबल का हुआ हमेशा 100% मैच हो जाएगा। तो वैसा केस नंबर सेकंड में आता है और वहां पे ये ही एक ही स्ट्रेट लाइन दोनों को रिप्रेजेंट कर देता है। देखो इस पे आप कंफ्यूजन होगा, मैं आपको वंस अगेन क्लियर कर देता हूं। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, देन ओनली वी आर गोइंग टू सी अबाउट द थर्ड केस। सपोज दैट फर्स्ट हियर this is what the coordinate 5 of y on y axis, or this is suppose we are getting here 4. Here we will see 0 and 5, then here we can say 0 and 3, then here we can say suppose here we are getting 6 and 2. So this is what the values we will get in both equation of both the variables. तो यही वैल्यू दोनों में आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। And now we are going to see about the third case, what happens in case number 3 when we go for solving a or when we go for solution of a linear equation. In case third, this is very important for us, because in case third we have to see one another thing, no need of writing x-axis y-axis, just simply you have to understand over here. In case 3, both the lines remains parallel to each other, means that whenever they will not cross each other, then we will not get at least one solution also. Hence we can say that there is no any solution of the both equations. This is what the third case which we have to deal related to the solution of linear equation by graphically. Now as I told you, I will give one example of every cases. So let me give the case number 1 example, then we will see the example of case number 2, and then we will go through the example of case number 3, and even we will represent it also. So let's start and see a question of linear equation in two variables. Before that guys, I am working this much for you all. I am working this much hard work, I am showing, I am doing for you all. So at least please like this video and comment if you are having any doubt, because I am not very happy from your performance, your way of behaving, because most of you are not asking anything as a comment. So please go and ask, man. So we are going to see about the first case or solution where we get only at least one solution. So let me write it first. X plus 2y equal to 3. X plus 2y equal to 3. X plus 2y is equal to 3. 4x plus 3y is equal to 2. ठीक है, ये हमारा two equations है. Here two equations are given. In case number first we are going to see, means that there we will get only at least one solution. और solution मिले या ना मिले, लेकिन एक solution जरूर मिलेगा. चलो भाई, तो इसमें देर क्या करना है, इसे फटाफट सोल्व कर दें और देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा आना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से. So we are going to solve first equation, this one. Here we have to always make this table, because this table is very essential, and we always have to remember one thing is that हमें याद रखना वालों कि हमेशा at least 3 values we have to find over here. Suppose we are going to put out here value, तो यहाँ पर से क्या होगा कि in first equation what we will get here, x is equal to 3 minus 2y. So we can write it. And one thing that I had not told you earlier is that every variable depends upon their पार्टनर ऑफ वेरिएबल, मींस दैट मेरा पार्टनर जो रहेगा उस पर मैं हमेशा डिपेंडेंट रहता हूँ. ये लीनियर इक्वेशन का वेरी सिंपल एंड वेरी स्टैटिक फॉर्म है, यानी जो हम वैल्यू लेंगे वो अगले पर डिपेंड करता है. अगर मान के चलो यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये डिपेंड करता है y के ऊपर, यानी एवरी वैल्यू और एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल ऑफ अनदर वेरिएबल, depends upon the another variable given in that question. Now we are going to solve this equation first. Here by putting the value of 1, y as a 1. Suppose we are going to take here y as a 1. So what we get is 3 minus 2 is equal to 1. 1 clear hai? And now we are going to suppose we are taking here 3 or 0. 0 when we are taking here 0, then what we will get here 3, as 0 into 2 is 0, and 3 minus 0 3. And now look here, suppose we are going to take here the value as 2, and now we are going to see what we will get. Suppose I am going to take here the value of 2, means value as 2, then what we will get here minus 1, because ये क्या हो गया हमारा minus 4 हो गया, and minus 4 plus 3 means 1 हमारा minus 1. These three solutions we got from the first equation. Now we are going to see the second equation, which is 4x plus 3y is equal to 2. ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर से कि x is equal हो जाएगा 2 minus 3y upon 4. अब देखो ये चेन हमें ऐसे फॉलो करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है ऐसे सिंपली, and here as well we have to take out 3
at least 3 solutions of the variables which are available in the second equation 2. Now we are going to solve it. अब देखो भाई यहाँ पे भी वैल्यू पुट अप करो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ा हमारा ये वीडियो हो चुका है, तो देखते हैं कि इसे कवर अप कैसे करना, हाउ वी हैव टू डील विथ इट. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी अबाउट दैट. नाउ वी आर गोइंग टू टेक दैट like that value only. Just see and start putting values. So suppose I'm going to take here y as a 6 because यहाँ पे हमें 4 से डिविजन होना चाहिए. तो पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, देखो अब ये हमारा यहाँ पे माइनस में, तो 2 माइनस 3y एंड यहाँ पे y हमारा क्या हो गया 18 हो गया. तो 18 माइनस 18 प्लस 2 यानी हमारा माइनस 16 यानी व्हाट वी गोट हियर माइनस 4. सपोज वी आर गोइंग टू टेक हियर y as a 2, then what we will get here 3 into 2 6 and 6 plus minus so 4. Finally we got here minus 1. And the last thing is that suppose we are going to take here what we can take, suppose I'm going to take 2 over 2, we already took it 2. Now we are going to 2 minus 2, then we will see what will happen. Suppose I'm taking here y as a minus 2, then what we will get here minus plus यानी 6 plus 2 8 यानी finally we got the value 2. Now let's look, हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वहां पे मैच करना. अगर कोई मिल गया, अगर एक ही मिलेगा भाई, क्योंकि ये केस नंबर 1 का है, तो अगर एक मिल गया तो समझो हमारा काम हो गया, यानी क्वेश्चन बन गया. हाँ भाई क्वेश्चन बन गया. अब इसे फटाफट रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे लो फटाफट इसे करो. ये हमारा सिंपल प्लेन है, यहाँ पे एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश. फटाफट ये ऑरिजिन हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर है. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. यहाँ पे जस्ट सिंपल प्रोसेस फॉलो करो, -1 -2 -3 -4 लाइक दैट ओनली, -1 -2 एंड -3. तो भाई हमारा ये जो हमारा वैल्यूज हो गया लाइक दैट ओनली. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड देन वी हैव टू रिप्रेजेंट इट वेरी सिंपली. एंड देखो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी वैल्यूज हमारा आएगा वो हमें स्केल से ड्रॉ करना, मींस दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय द स्केल, देन ओनली यू कैन ड्रॉ द वेरी स्ट्रेट लाइन. नाउ लुक हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट इक्वेशन. तो ये हमारा 1 1 वैल्यू आ गया 0 3, मींस दैट एक्स एक्सिस पे हमारा 3 यहाँ पे आ गया. सेकंड है हमारा, एंड थर्ड कहाँ हो रहा है -1 2, मींस दैट हमारा -1 यहाँ है, सॉरी एक्स का -1 यहाँ और वाई का 2, मींस दैट ये यहाँ पे हो गया. एंड नाउ लुक हियर, व्हेनेवर वी विल ड्रॉ विथ स्केल वी विल गेट ए लीनियर लाइन और ए स्ट्रेट लाइन. ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, आपको क्या करना है स्केल के थ्रू ड्रॉ करना है. एंड लेट्स रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सेकंड इक्वेशन वैल्यू दैट वी गॉट -4 6. here -4 where is -4 means that we have to take over here up to here we will take, then second -1 -2 as same usual over here, then third here we get 2 and -2, means that in case in last 2 and -2 over here. And when we will draw another linear line that we will set that both the lines are crossing each other means at one point. तो यहाँ पर से क्या क्लियर होगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन ऑफ केस 2 वाइज. तो हम टाइम वेस्ट ना करके फटाफट क्वेश्चन देख रहे हैं, और फटाफट जितनी जल्दी हो उतना ही आसान से समझते हो, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 9 में इसे अच्छी तरह से कंफर्म हो चुका है. लेकिन वहाँ पे क्या रहता है कि हमें only we are given there only one equation, and in case of one equation only we have to find only the values of two variables and even we have to represent. Now we are going to see about the second case, यानी केस नंबर 2 का फटाफट एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ. So wait guys, wait you all. सेकंड केस का हमारा एक फटाफट क्वेश्चन आ रहा है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. तो चलो मैं एक एग्जांपल आपको फटाफट दे रहा हूँ. वेट करो गाइस, वेट. सो गाइस अब आपका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आपके लिए मैं एक फटाफट क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ. देखो क्वेश्चन क्या है, केस नंबर 2 का 3x - y = 2 एंड विच फर्स्ट इक्वेशन y लो, सेकंड इक्वेशन दे दो मुझे. लेट मी सो यू ऑल द सेकंड इक्वेशन क्या हमारा 9x - 3y = 6. वेट गाइस, actually I am not so well, so that I am taking certain time. 9x - 3y = 6. तो भाई लोग यहाँ पर से कोई डाउट नहीं है, हमें फटाफट इसे सोल्व करते हैं. जस्ट हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है, एक्स वाई का टेबल डिजाइन करो एंड फटाफट 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करो. फटाफट देखो क्या होगा, अब फटाफट पुट करो कि यहाँ पर से हमें y को निकालना है. तो y = क्या होगा 3x - 2 एंड हियर जस्ट वी कैन डू दैट ओनली 9x - 6/3 = y. अब देखो फटाफट ये दोनों हमारा टेबल फटाफट बन गया. इसमें कोई टाइम नहीं लेना है, क्योंकि हमारा भी थर्ड वाला भी बचा हुआ है, यानी थर्ड केस का ओवर दे. तो फटाफट इसका क्या क्या होगा देखो, तुम फाइंड आउट करो, मैं फटाफट लिख देता हूँ, यानी मैं फटाफट लिख देता हूँ. आपको बस इसे सोल्व करना है कि ये आता है कि नहीं.
देखो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा जो हमारा फर्स्ट हो गया, एंड सेम वैल्यू यही में हमारा सेकंड में मिलेगा गाइस। तो आप बिल्कुल कंफर्म क्लियर ना हो, क्योंकि यही हमारा जो वैल्यूज आएंगे वो आने वाले हैं। इसको हमें फटाफट ऐसे करके लिख देना। चलिए आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज हियर वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज ए -1, सो व्हाट विल गेट हियर 3x मींस -3 एंड -2 यानी -5। क्लियर है? अब चलो जीरो लेके देखते हैं। इन केस नंबर 1 वी आर केस 2 वी आर गोइंग टू सी और वी आर टेकिंग हियर 0 एज द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा 0 हो गया एंड 0 में -2 यानी -2 को -2 आ गया। अब चलो यहाँ पे 2 लेके देख रहे हैं, तो ये 6 हो गया, 6 - 2 = 4 हमारा, यानी ये तीनों हम जो वैल्यू लिए ये सही है हमारा। और देखो ये एक्चुअली ये तीनों मैच कर रहे हैं, जो मैंने पहले बता दिया दैट आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी दैट both the values of both the equations will get same only, so it is very essential and very easy for us to represent their values on the graph। तो फटाफट ये कर दो और ऐसे ड्रॉ करोगे यानी सभी इसी में आएगा, एक ही पे सब बन गया, यानी हमारा क्वेश्चन सेकंड केस सोल्व हो गया गाइस। यानी हियर वी सॉ द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड केस, देयर वी हैव टू सी दैट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स gets equal or equal। then we are going to see about the third case, there we have to see that no any value will match, means that कि एक भी वैल्यू नहीं होगा दो इक्वेशन में। so wait guys, let me give you that question also। आ गया guys, आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये देखो आपको क्लियर दिखा है 2x - 3y है, ठीक है। 5y मत लेना, क्योंकि दिस इज व्हाट द सेकंड इक्वेशन वी गॉट। अब देखो वालों इसका भी जस्ट हमें टेबल ऐसे फॉलो करना है x y। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x - 5/3 इज इक्वल टू y। हियर वी कैन राइट 6x - 3/4 इज इक्वल टू y, एंड देन वी हैव टू ड्रॉ दैट टेबल x y। ये ऐसे ड्रॉ करो फटाफट, तीन वेरिएबल ये ऐसे ड्रॉ करो हमारा फटाफट से। हियर गाइस वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव टू मेक एटलीस्ट 3 टेबल, एंड देन 3 टेबल का वेरिएबल का वैल्यू लाओ और देखो फटाफट ये बनकर आएगा। हाँ गाइस आएगा, मतलब आएगा। देखो अब एक चीज और, बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग रिगार्डिंग टू यू दैट देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे आर इन पोजीशन वेयर दे गेट द वैल्यू एज इन फ्रैक्शन फॉर्म। so don't get confused whenever you are going to solve or you are getting the value in variable, or we can say that and fraction। in fraction वाला बहुत क्लियर होता है, बहुत ही इजी होता है हमारे लिए। एक्चुअली there we have to apply our common sense, or we can say that there we have to apply our presence of mind। means that देखो आपको क्लियर कर देता हूँ 1/10 means what 0.1, 1/2 means what 0.5। यानी ये जो हमारा होता है, ये देखो ग्राफ में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 9 lines are there, then we get 1 means that वहां पे 0.1 0.2 0.3 सभी अवेलेबल होते हैं। बस हमें अपना presence of mind there we have to apply, and then we will get overall 100% value। so let me write first -2 -3 -1 -2 -3 1 -1 and then 4। another thing that we are going to see 1, and the second देखो हमारा सेकंड का कैसा आ रहा है -3 -3/2 -3 -3/2। most of the students might be getting confusion, or they might be thinking why I am giving that this is already shown, or which is very simple for us in order to make you understand, because when I will give question then there we have to take much more time for writing a question, then only we will go through it, but it is very essential and very easy। and when you want, if you want more questions, you have to join our telegram channel that I already told you। there only you will get most of the questions regarding to every lectures, every topics which I give to you all। देखो गाइस ये हमारा क्या होने वाला है, देखो अब वैल्यू नाउ वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू दैट वी आर पुटिंग हियर आर एक्चुअली राइट और रॉन्ग। सपोज वी आर टेकिंग हियर -2 एज द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट वी विल गेट हियर -4 -5 मींस -9/3 ये हमारा, यानी ये सही है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन वी हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दैट ओनली, एंड वी हैव टू मेक ए ग्राफ लाइक दैट y डैश x डैश x हमारा जस्ट फटाफट ऐसे पुट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and here also 1 2 3 4 5 6, but -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 and -6, and at 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 like that only। when we will represent both the lines, then let me first -2 -3 -2 means third quadrant here,
minus 2 minus 3. Suppose here this is the point. Suppose I'm going like that, and when we will go, suppose another line minus 3 upon 2, means that minus 3 and minus 3 upon 2, means that over here, and we will go, when we will go through these two equations or the lines, that we will see that both the lines are parallel from each other in every position. यानी हमेशा वो parallel ही होता है, and this is what we can't get any solutions of the equations in both cases. So guys, यहीं तक हमारा ये clear होगा. लास्ट केस जो हमारा था, here I gave you the question and how is this particular video, कमेंट करना ना भूलेगा. हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में. और ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को मैंने पहले बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट you have to join our telegram channel. There only you will get a lot of questions regarding to every concept, everything which we discuss in our video. So meet you all in next video. Have a nice day to you all, and please don't forget to comment and ask questions if you are having any doubt.